Okay, so let me present my screen. Please tell me if you can see my screen. Yes, ma'am, we can see. Yes, ma'am. Okay, so girls, we started our this topic previously on the in the last online classes, food and digestion, and we also completed this entire chapter in the during the phase of our online classes, and we didn't got a chance to learn it on in face to face lessons. And definitely your scheme of work, it doesn't allow me to, I mean, revise it again. But definitely if we complete all our chapters, and still if we have time, then we will do a short revision of this topic again. Now, so let's go through this topic once. So when we started studying this chapter, food and digestion, it started off from the essential nutrients and the types of nutrients. Okay, so essential nutrients, they told us that what is a balanced diet. Balanced diet is a diet in which you are supposed to means you are supposed to take in all nutrients in a balanced manner. You cannot eat something in excess and not something in, means not at all. The diet in which there is all nutrients. Yes, exactly. So there are six essential nutrients in your body, which your body needs. Number one is uh, carbohydrates, proteins, and fats. These are the macronutrients, and vitamins and minerals. These are the micronutrients. Macronutrients Macronutrients are the ones which are required in small amounts, and macronutrients are the ones which you need in large amounts, and micronutrients are the ones which you need in small amounts. Apart from all these nutrients, the function of nutrients is to um, give you energy. It provides the body with normal functioning, and to carry out the body functions. All right. Apart from these five nutrients, we have water and fiber. Fiber and water, they are essential part of your diet. Water is because 70% of your body is made up of water, and you need it in order to for your body to work properly. And fiber is a type of a nutrient which is not actually a nutrient, but it is a type of food which helps in digestion, proper digestion. Okay, then we have studied this topic already, and we have done all of these open-ended questions. Now, I already told you that there are two types of nutrients: macronutrients and micronutrients. You should know that. Now, this is the percentage of macronutrients. 65 to 80% in your diet should be macronutrients, 10 to 30% fats, and नहीं सॉरी ये ऊपर नीचे लिखा गया है, 10 to 30% प्रोटीन्स होने चाहिए, और फैट्स होने चाहिए 7 to 15%. ठीक है, तो दिस इज जस्ट राइट. Micronutrients, on the other hand, these are vitamins and minerals, and they are required in small amounts. Then we discussed in detail about carbohydrates, about fats, and about proteins. Okay.
So after studying about nutrients, you should know. अब न्यूट्रिएंट्स में हमने विटामिन और मिनरल्स को भी काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था. विटामिन्स में हमने ये पढ़ा था कि विटामिन्स के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, एंड उसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं. देन वी आल्सो स्टडीड अबाउट वाटर soluble vitamins and fat soluble vitamins. Water soluble vitamins are A, D, E, and sorry, water soluble vitamins are B and C. Fat soluble vitamins are A, D, E, and K. ठीक है, ये फैट soluble vitamins है A, D, E, K, और वाटर soluble विटामिन है B and C. हर विटामिन का अपना फंक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल, vitamin A, it helps in your vision. So if you have a deficiency of vitamin A, you will suffer from night blindness. Okay, so you will suffer from night blindness if you have deficiency of vitamin A. Similarly, if you have deficiency of vitamin D, the function of vitamin D is that it lets your bones absorb calcium and become more stronger. So if you have deficiency of vitamin D, then the disease which is caused, mm, sorry, it's rickets. In rickets, the bones they are bent. ठीक है, bones bend हो जाती हैं. Then vitamin C, it helps in proper regulation of your blood in teeth, gums, and all of the sensitive places. And that's the reason that when vitamin C is deficient in your body, the disease scurvy happens. ठीक है, जिसके अंदर your gum starts to bleed and they become swell. Then we studied about different types of minerals. For example, iron, it helps in transporting oxygen in your body. So if you have deficiency of iron, you can suffer from anemia. And then if you have deficiency of calcium, your bones will be more hollow from inside, and as a result you will suffer from a disease known as osteoporosis, in which your bones become weak and brittle. Okay, and that is it. That was all about vitamins and minerals. ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. Okay, I'm just going to go through the digestive system once. You should know this too, that when you eat the food or when you drink, and if you're talking while drinking, then the air is going to go inside your stomach via the esophagus, and that air is pushed out in the form of burp when we burp. Then I showed you this 3D diagram of the digestive system. This is the actual diagram of digestive system. आपको ये सारी diagram label करनी आनी चाहिए, पहली चीज़. ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होती है. ये अक्सर और बेशतर मेरे पेपर्स में क्वेश्चन होता है, दैट वेयर डज द डाइजेशन स्टार्ट. इट स्टार्ट्स ऑफ इन द माउथ. ठीक है, इसके बाद व्हाट इज द प्लेस जहाँ पे बिल्कुल डाइजेशन नहीं होती. Anas, ऑसोफेगस. Esophagus is the place जहाँ पे digestion नहीं होती. It only it's a path to move your food from mouth to your stomach. Okay, then अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है गर्ल्स के my tests, अच्छी बात है आप लोग पेपर से यानी कि कैट से पहले एक दफ़ा ही टेस्ट कर लें. then it's good, आपको पता चल जाएगा कि मेरे कैट्स का पैटर्न कैसे होगा. मैं बिल्कुल ये टेस्ट अपने कैट के पैटर्न पर बनाऊंगी. ठीक है, सो यू वुड बी एबल टू डू द कैट इजीली. ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं. दैट इज़ वाई आई एम प्लेसिंग दिस टेस्ट इन दिस वीक. ऑल राइट, सो then
Now the digestion starts off from your mouth. माउथ में टीथ होते हैं, टीथ masticate the food. Mastication is chewing in scientific terms. Mastication chewing को कहते हैं, ठीक है. And when the food is in your mouth, your salivary glands, which are there in your cheeks, they secrete saliva. Saliva contains an enzyme that is known as amylase, and amylase partially breaks down starch, which is inside the food, which is in your mouth. Okay, when the saliva it mixes with your food, that's why the elderly people say that chew food well and then swallow it. So when you swallow it, it's going to go down to through the esophagus. And now the point which is to be noted in esophagus is peristalsis. It is the rhythmic movement of esophagus which pushes the food down to the stomach. All right, then you have this stomach over here. Stomach contains two things. One, an enzyme which is known as pepsin, okay, and pepsin breaks down proteins. Secondly, please turn your mic off. Okay, thank you. Secondly, the stomach contains stomach acid, and it is very strong acid. And the function of the acid in stomach is the that it kills all the bacteria and the germs which goes down into your digestive system by the mouth. Okay, so then the food stays here in the stomach for about 4 hours, and then from stomach the food goes to the small intestine. अब गर्ल्स यहाँ पे आपको तीन ऐसे ऑर्गन्स दिए हुए हैं, लिवर, गाल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज. इन तीनों ऑर्गन्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, बट ये इधर से फूड गुजरता नहीं है इटसेल्फ. फूड कहाँ से गुजरता है? एलिमेंट्री कैनाल से. एलिमेंट्री कैनाल क्या है? माउथ, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. ये एलिमेंट्री कैनाल है. अब लिवर, गाल ब्लैडर और पैंक्रियाज का क्या फंक्शन है? लिवर एक डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है फैट्स की ब्रेक डाउन के लिए, जिस डाइजेस्टिव जूस को हम कहते हैं बाइल, BILE, बाइल. ठीक है, लिवर ये जूस प्रोड्यूस करता है. लिवर से गाल ब्लैडर के अंदर ये आके स्टोर होता है जूस, बाइल. गाल ब्लैडर फिर इस जूस को सिक्रीट कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्ट में. अब बाइल के अंदर एंजाइम होता है लिपेज. ठीक है, लिपेज एंजाइम का क्या काम है? लिपेज एंजाइम का काम है कि ये एंजाइम जो है ये फैट्स को ब्रेक डाउन कर रहा है इनटू इट्स सिंपलेस्ट कंपोनेंट्स. ठीक है, अब यहाँ पे आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इवन आपका जो ज़्यादातर डाइजेशन का प्रोसेस है वो भी स्टमक में नहीं होता. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल सिक्रीट होता है, और दूसरी चीज़ जो स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होती है दैट इज़ द पैनक्रियाटिक जूस. Pancreatic juice is a juice. It is you can say it's a secretion from your pancreas. And again pancreatic juice के अंदर भी enzymes होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के फूड्स को डाइजेस्ट करते हैं. ठीक है, जैसे कि pancreatic juice के अंदर trypsin होता है. Trypsin is an enzyme which breaks down proteins, and इसके अंदर amylase होता है जो स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है. ठीक है जी, इसके बाद जब सारी चीजें ब्रेक डाउन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती हैं, आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है. ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी सारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रही होती है. न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो जिनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, और आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में चले जाते हैं और अपनी बॉडी के बाकी एरियाज में चले जाते हैं जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट होती है. आफ्टर दैट
when the food, the undigested matter, it goes into your large intestine. In large intestine, the water is reabsorbed. जो एक्स्ट्रा वाटर आपके फूड के साथ मिक्स हुआ हुआ होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में रीअब्सॉर्ब होता है, और फिर पूरी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होती रहती है, एंड देन द डाइजेस्टेड मैटर इज स्टोर्ड ओवर हियर इन द रेक्टम and it is expelled out from your body through the anus. अब ये डेफिनेशन है, ये आपने याद करनी है ऑसोफेगस की, स्टोमक की, इंटेस्टाइन्स की, पेरिस्टाल्सिस की, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन, डाइजेशन, डाइजेशन के फेजेस याद करने हैं, इंजेशन क्या होती है, एलिमिनेशन क्या होती है, एब्जॉर्प्शन क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन, ये भी याद करना है आपने, ठीक है जी। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ टीथ, ये आपकी बुक में भी गिवन है, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ टीथ कितने होते हैं? चार। इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ठीक है। इंसाइजर्स आर द एट द फ्रंट, they bite the food. Canines are the ones having a sharp pointed edge. They tear the food apart. Then premolars and molars grind and chew the food, ठीक है। इसके बाद इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर भी आपने याद करना है, ये वाली डायग्राम जो है। देन आई टोल्ड यू ऑलरेडी, एसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्सिस होती है, पेरिस्टाल्सिस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज स्लाइवा का पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, कहाँ सिक्रीट होता है। देन स्टोमक, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि स्टोमक में फूड तकरीबन 4 आवर्स के लिए रहता है, एंड ओनली enzyme which is secreted in stomach is pepsin and it breaks down proteins. इसमें स्टोमिक एसिड होता है which is hydrochloric acid, ठीक है जी। इसके बाद the food goes to the small intestine and all the digestive juices are secreted in small intestine. Bile and pancreatic juice. Bile contains lipase enzyme, and pancreatic juice contains amylase and trypsin, that is protease enzyme. All right, then peristalsis, we've discussed that. अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये जो हेल्पिंग ऑर्गन्स के बारे में यहाँ लिखा हुआ है ना, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। Then liver and pancreas, they send more gastric juices to small intestine. अच्छा, अब बेसिकली क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि मेजरली डाइजेशन किधर होती है आपकी बॉडी में, तो मेजर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब एब्जॉर्प्शन होती है, तो मैं आपको विलाय का बता रही थी, ये विलाय का स्ट्रक्चर है, इनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, और दूर से ये ऐसे नजर आते हैं, जैसे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, करीब से ये ऐसे नजर आते हैं, these are finger like projections, and the nutrients, when the food passes through these villi, the nutrients are absorbed and sent into the blood. All right, then the last stop is the large intestine. Again, the water is removed over here. Now this table is also very important. It tells you all the enzymes, all the digestive enzymes, where they are produced and where they are released. Salivary amylase, amylase in saliva is an enzyme produced by your salivary glands and it is secreted in your mouth. Pancreatic amylase is produced in your pancreas and secreted in small intestine. माल्टेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फिर पेप्सिन और ट्रिप्सिन आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। पेप्सिन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में बनता है, स्टोमक में रिलीज होता है, और ट्रिप्सिन पैंक्रियाज में बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। अब यहाँ पे गर्ल्स एक क्वेश्चन है कि जब पेप्सिन
और ट्रिप्सिन दोनों प्रोटीन डाइजेशन के लिए यूज होते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? ऐसा क्यों नहीं है कि पेप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सिक्रीट हो जाए? इसका आंसर ये है कि पेप्सिन, हमारा जो स्टोमिक है, स्टोमिक में एसिड है, एसिड की पीएच लेवल जो है, दैट इन योर स्टोमिक दैट इज एसिडिक, वहाँ एसिड प्रेजेंट है, वहाँ ट्रिप्सिन वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ट्रिप्सिन एसिडिक कंडीशन में जाएगा तो ट्रिप्सिन मर जाएगा, अगर पेप्सिन एसिडिक कंडीशन से बाहर आएगा तो पेप्सिन मर जाएगा। ठीक है, मतलब ये अपने अपनी जगहों से अगर आप इन्हें डिस्प्लेस कर दें तो दे वोंट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन. So pepsin is designed in a way by your body that it can withhold the, you can say, the torture which is going on in your stomach. ठीक है, ये एक टॉर्चर ही है, जब एसिड उसके साथ टच करता है तो पेप्सिन की जगह कोई और जो एंजाइम है वो वहाँ पे वर्क नहीं कर सकता. दैट्स वाई स्टमक में पेप्सिन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन होता है, क्योंकि स्टमक की पीएच एसिडिक होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच बेसिक होती है. बेसिक मीन्स इट्स एल्कलाइन. Then you are not supposed to do peptidases and nucleic acid digestion भी आपने नहीं पढ़नी कि ये क्या होता है. इसके बाद जो आपके लिए important digestive enzyme, that is lipase, it is produced in your pancreas and it is released in your small intestine. All right. Now, this diagram is telling you that what is these enzymes working on and what are they producing as a result. Amylase always acts on starch and converts it into maltose or glucose. Protease are the enzymes which digest proteins and convert them to amino acid. Lipase are all the enzymes which act on fats and convert them to fatty acids and glycerol. Is it clear to everyone? That Yes, is ma'am. Yes, ma'am. okay. If you have any questions, then you can ask the questions from now. एक्सक्यूज मी मैम. Yes. मैम ये जो विटामिन सी और ये जो विटामिन डी Hmm. वगैरह जी, समझ नहीं आई मुझे. डेफिशिएंसीज और